हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Strong at least. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to. I'm sorry. I'm sorry to ask, but It's little John. He's got himself caught into a scrape again. he ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. This way. तो गाइस आपने इन सब की बातें तो सुनी होंगी। अभी हम जा रहे हैं जॉन को ढूंढने के लिए, जो कि 2 दिन से मिसिंग है। असली सीन कुछ ऐसा हुआ था कि हम न्यू कैंप पे शिफ्ट हुए थे, तो जॉन को नहीं पता था इस कैंप के बारे में, जिसकी वजह से वो मिसिंग हो चुका है। तो अभी उसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। सर्दी भी काफ़ी पड़ रही है। Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently. And that way. Sure, well, come on then. तो यहाँ पे आग जल रही थी और थोड़ी ही देर में यहाँ से कोई लेफ्ट हुआ है ना, यहाँ से कोई गया है। तो अभी हम उसी के पीछे जा रहे हैं। हमें यही लगता है कि यहाँ पे जॉन ही होगा, जो यहाँ से अभी गया है। See, they continue up that way. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but तो अभी हमें हॉर्स के पाँव जो कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, हमें इसी को फॉलो करते हुए आगे जाना है और जॉन को ढूंढना है। हमें यही लगता है कि ये जॉन ही होगा, we had the money, it seemed जो कि fine. इस तरफ गया है। Suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. तो गाइस इस गेम प्ले के आप ग्राफिक्स देख रहे होंगे नहीं, ये वन ऑफ द बेस्ट गेम प्ले जो कि बनाते हैं ना, ये जिन्होंने GTA 5 वाइस सिटी 5 बनाया ना, ये उन्हीं की गेम प्ले है, रॉकस्टार की। But it was a bad situation. तो अभी इनकी आने वाली न्यू गेम, ये सेकंड गेम थी इनकी, और थर्ड गेम आने वाली है जो कि GTA वाइस सिटी 6 होगी। They continue along the cliff wall here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, तो गाइस इस गेम प्ले को खेलते हुए आप कभी भी बोर नहीं होंगे। ये इतनी मज़े की गेम है, इतनी इन्होंने मतलब बेस्ट ग्राफिक्स पे बनाई है ना, और रियलिटी पे बनाई है ना, कि इसको आप खेलते हुए कभी भी बोर नहीं होंगे। Damn snow's coming in hard again. we'll lose these tracks if we don't move fast. Despacio. Careful, it's getting narrow here. Come on, boy. तो अभी हम माउंटेन पे जा रहे हैं, तो हमें ना यहाँ पे ना स्लिपरी का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए हमें ध्यान से चढ़ना है, I don't know about this, Javier. कहीं यहाँ से स्लिप ना हो जाए। Follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Almost there, boy. Come on now. Hey, look! Over there! You see that?
तो वहाँ पे कुछ नज़र आ चुका है हमें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉर्स है जो कि मर चुके हैं यहाँ पे और कभी इसको खा रहे थे। Riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. तो बिल्कुल ये जॉन का ही हॉर्स था। जॉन भी यहीं कहीं आसपास होगा अगर वो जिंदा हुआ तो। Up there. Yeah. He's coming from up ahead somewhere. तो कहते अगर आपको साउंड आ रहा होगा तो आपको जॉन की आवाज़ आ रही होगी। We'll have to walk from here. I grabbed that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? आगे ख़तरा भी हो सकता है इसलिए हम अपनी गन साथ लेके जाते हैं। Getting that gun then? Down this way. तो कहीं तक भी रास्ता आगे से ऐसा है ना कि हम पैदल जा सकते हैं, हॉर्स को नहीं लेके जा सकते। तो घोड़ों को यहीं पे खड़ा करके हम पैदल जाएंगे आगे। It's slippery, be careful. यस, यहाँ पे स्लिपरी है। वो बोल रहा था कि यहाँ पे केयरफुल रहना है, स्लिप होकर नीचे नहीं गिरना। Near that we're high up here. You're telling me. जो उनकी आवाज़ें आ रही हैं, हेल्प मी। मुझे भी लगता है कि हम जॉन को बचा के ले जाएंगे वापस। Drops down here. Watch yourself. Careful here. Watch your head here. यहाँ से हमें नीचे बैठना होगा। यस, Okay. Good now. Watch your step. She's real slippery. Stay close to the wall. बनाने वालों ने भी क्या गेम बना दी है इसकी। गाइस मुझे स्टोरी बहुत ही पसंद आई है। Come on. जितनी भी स्टोरी गेम है ना, उनमें से ये सबसे बेस्ट गेम प्ले है। We're coming, John. Damn, it's cold. तो मॉर्गन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Here. Take a drink of that. Thanks. I'm not designed for this snow. Let's keep moving then. Come on. John, where are you? John, can you hear me? Marston, you hear me? I'm here. Down on the ledge. That's John. We're coming. Fella's there. लेफ्ट साइड से कहीं से आवाज़ आ रही है जॉन की। Down here. तो बिल्कुल यहाँ पे जॉन मिल चुका है। Right down, Marston. Arthur, come on. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. तो गाइस जो जॉन है ना, इस पे भेड़िए ने हमला किया था, इसलिए उससे बचते हुए जॉन यहाँ पे आके ना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसके हॉर्स को भी जो है ना भेड़िए नहीं मारा है। Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a
तो अभी हम जॉन को लेके वापस कैंप पे जाएंगे। Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You alright? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Look up इन्हीं की there. कमी थी गाइस। भेड़िया आ चुके हैं। I'll distract him while you get to the horses. Go. Draw them off. All right, John, come on. तो यहाँ पे मैंने 2 फायर करके डराने की कोशिश की थी वुल्फ को, लेकिन नहीं, ये उल्टा हम पे हमला करना शुरू कर दिया है। ओके, तो ये इन तीनों को तो मार दिया है और यहाँ से हम निकलते हैं जितनी जल्दी हो सके। Okay, let's get going before any more of these bastards show up. गाइस इस गेम प्ले की मैंने आपको बताया ना, रियलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए जॉन की जो ना ब्लीडिंग हो रही है और वो आपको दिख भी रही है। Come on then. तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा रहा, वहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग है। तो ये गेम ने जो है ना, इसने छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क किया है। छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल इसमें है। You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella? Got bit by a dog. Died. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. More coming down the hill. तो गाइस और भेड़िया आ चुके हैं, इनको भी मारेंगे अभी। Look out on the right. Got more wolves on the 2 को तो मार दिए, एक लेफ्ट से और आ रहा है, इसको भी मारेंगे अभी। 2 हो रहे हैं। तो फाइनली इन 4 को मार दिया है। More, Arthur. Don't think so. Jesus. तो मॉर्गन बोल रहा है कि मुझे लगता है कि अभी नहीं आएंगे। You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. तो फाइनली गाइस हम जॉन को बचा के तो घर ले आए हैं वापस। Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank You you. got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We've been running for weeks.
We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. गाइस इस गेम प्ले की जो स्टोरी है ना वो आर्थर मॉर्गन ने लिखी थी, ठीक है। और जो उसने अपनी लाइफ में जो चीज़ देखी थी, जो चीज़ किया, जो अपनी लाइफ में सर्वाइवल जैसे जैसे किया है, वो सब अपनी स्टोरी में लिखता गया, अपनी बुक में लिखता गया, और उसी स्टोरी को देख के ये गेम प्ले बनाई गई है। आर्थर मॉर्गन हमेशा अपने पास एक बुक रखता है, अपने पास एक ऐसा नोट रखता है जिसपे हर चीज़ वो लिखता है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट मिशन जो है ना वो कुक का आ रहा है, तो अभी कुक के पास चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है कुक। We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. तो फाइनली गाइस कुक ने हमें बताया कि हमारे पास जो खाना है ना वो कुछ दिन का बाकी है, 10-12 दिन का जो खाना है, और इतने बंदों के लिए जो इतना खाना काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हमें हंटिंग पे जाना होगा, शिकार पे जाना होगा और कुछ खाना लेके आना होगा। Come on, this way. Whoa. How are you holding up, Charles? I'm okay. Apart from this तो गाइस अभी हम चार्ल्स के साथ जाएंगे हंटिंग के लिए। Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. There's some patches of grass here. This is good.
Let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. तो यहाँ पे हमें फाइनली घास नज़र आ चुका है और यहीं पे हमें जो है ना अपना शिकार भी मिल जाएगा, इसलिए हम इस तरफ राइट साइड पे उतर चुके हैं नीचे। यहीं पे हमें रोक के ना आगे सिंपली ऐसे जाना होगा। Hey, stop here a second. I see something. Careful. चार्ल्स ने कुछ देख ली इसलिए वो बोल रहा है यहीं पे रुको और मुझे Has deer been here recently? Okay. We'll track them तो गाइस चार्ल्स को डियर के ना पाँव के निशान मिल चुके हैं, तो वो बोल रहा है यहीं कहीं पे डियर है quietly and slowly. और हमें स्लोली स्लोली वहाँ उसको ढूंढना है। डियर के जो पाँव के निशान हैं इन्हीं को फॉलो करते हैं। I think so. Maybe not. Focus. चार्ल्स बोल रहा है फोकस करो, तो हम डियर के पाँव को फॉलो करते हुए फाइनली गाइस डियर तो हमें मिल चुका है, तो इसको हम शूट करते हैं। There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Try to hit him in the neck or head. Good shot. तो जल्दी में मैंने 2 फायर कर दी, वैसे तो एक ही से शूट हो गया था। कभी हमें एक और डियर को ढूंढना है, क्योंकि हम 2 बंदे आए तो 2 डियर को लेके जाएंगे साथ में। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि पानी के उस तरफ एक और डियर है। तो गाइस हमें एक और डियर नज़र आ चुका है। तो इस तरह बैठ बैठ के जाने से इस तरह उसको पता नहीं चलेगा, नहीं तो वो भाग जाएगा। थोड़ा यहाँ से शूट करना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है थोड़ा नज़दीक जाना चाहिए। Focus, Arthur. We need this meat. Unlucky. तो मैं ठीक से शूट नहीं कर पाया, तो डियर भाग चुके हैं। इनका पीछा करते हैं इनको। तो यहाँ में मिल चुका है, अभी ये आराम से इसको शूट करेंगे ताकि ये भाग ना जाए। Well done. तो फाइनली हमने 2 डियर को शूट कर लिया और इनको लेके वापस जाएंगे कैंप पे। Okay, you pick up one. I'll get एक वो आपको नज़र आया आगे भागता हुआ। Sure your hands okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. तो यहाँ में आपने हॉर्स को सीटी बजा के बुलाना है अपने पास। तो फाइनली गाइस हॉर्स आ चुका है और इस पे रख के हम अपने डियर को लेके जाएंगे अपने कैंप पे। Pretty good. Come on. Yep. Ready to head back when you are. Come on then. Let's head back. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon,
People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring up and over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. तो अगर हम रास्ते में जा रहे थे वापस अपने कैंप पे तो हमें ना एक बेयर नजर आ चुका है, इसलिए हम उसका वेट करेंगे उसके जाने का, तो वो बहुत पावरफुल होता है। हम इसको रिच बोलते हैं और इसको जाने देंगे और रास्ता थोड़ा चेंज कर लेते हैं। Cut up here, off the trail. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. तो फाइनली गाइस हम अपने कैंप पे वापस पहुंच चुके हैं। Whoa. I'm gonna hitch tie him over here. Brought some food back, boys. That's good. Come on, let's get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Well. तो कोक देख के बड़ा खुश हो रहा है। What a surprise. To find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The तो only गाइस ये thing. स्टोरी मोड गेम प्ले है, इसलिए मैं ज़्यादा इस गेम प्ले को इस वीडियो को छोटा करने के लिए कट नहीं कर रहा है। और गाइस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना आप लोगों ने। It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the तो jokes. कभी हमें बोल रहा है कि इसकी स्किन उतारने में भी हेल्प करें। Burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one that you dumped on the floor there. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Run now. Everyone's got
gotta do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days.